All right, guys, let us start with some Capablanca game study. Capablanca. Let's go. Mhm. Okay, so we read about him, blah, 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 whatever bro has to say, Mr. Author, and now it's time to see the game. I'm not sure if I should just do the replay training stuff first or I should just directly start a game because the game is a bit too long. But actually, not that long, 26 moves long only, but Um, yeah, I guess the questions and stuff would be better. So I guess I should not read it like a classical game, but I should read it like a book and just say, just go on as per the author says, so that should be better in my opinion. Yeah. Yeah, that should be better for sure. Uh-huh, 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 uh-huh. नाटकारों की तलाश नाटकों आंधी बन के आया हूँ मौसम मौसम हर में हमें coordinates. Hmm. Yes, I'm more than interested to see this. Okay, so I was basically okay. चलो बुक की तरह ही पढ़ते हैं whatever. Okay. So, Corzo, our hero's early rival, later went on to become one of Capablanca's biggest fans, even writing a regular column in What Else Capablanca magazine. Okay, so E4, C3, knight C6. Today, the Vienna game is more commonly met by Kappa. Kappa is black, no? Okay. Yes, is more commonly met by knight F6, F4, and takes. Sorry, knight F6, F4, and D5. Yes. F4, okay, takes, okay, knight F3, G5. Question, is it still a Vienna? I doubt. It looks like some sort of King's Gambit accepted, typical knight F3, G5, knight C3, knight C6. Answer the game transferred to like exactly. We choose our opening as a way of reflecting on each other. King's Gambit and Cole players are two very different players. H4, G4. Yes, that's true. What 12-year-old isn't delighted to enter the violent ham Paliker Gambit on the other side? Okay. Question. Isn't it an unsound gambit? मुझे क्या पता यार इंटरेस्टिंग ही होती है कुछ भी अनसाउंड नहीं होती है मुझे तो पता ही नहीं कोई गैम्बिट है बट H5 आ रहा है F5 भी आ रहा है D5 भी आएगा लेटर अनसाउंड तो कुछ नहीं है cause it's fun प्यूरिटनिज्म वो क्या होता है भाई the बाप रे Puritanism. Puritanism. अरे बाप, the beliefs or principles of an English Protestant. हम्म नहीं ब्लेंडर नहीं है ना नाइट F7 पे आगे मर जाएगा the knight is on a suicide mission a deliberate peep exactly yes F6 ब्लेंडर होता है Queen G4 nice Queen F knight F7 King F7 Bishop C4 D5 very interesting even at the cost D4 Bishop D6 D5 Bishop B4 Bishop C6
Yes. Queen G4. Knight F6 takes bishop D6. Like shaky competition. D4. Nice. D5. Nice Capablanca. वाह वाह कैपा जी वाह. वाह. ठीक है. G4 बचा रहे हो. नाइट G7 आ रहा है. F5 पे G6 पे जा रहा है. 6 आ रहा है. ठीक है. Bishop F4. Yeah, I guess you can just play knight F6. No. Takes it should be good. Looks better than but even here. Right? Queens. अच्छा. Okay. Bishop E2. Orzo's attempted improvement over his unsound bishop E2. F3, GF, GF. Queen H4. Let's give Kappa winning position 6K. I don't know the rest. What's up? Direction. King. Too bad. How does it? G3. एक्चुअली यहाँ पर गेस द मूव करनी चाहिए. इट शुड बी गुड एक्सरसाइज फॉर श्योर. पहले गेस द मूव कर लो. फिर उसके बाद यू कैन जस्ट आई कैन जस्ट गो फॉर seeing the game like naturally, you know. So G3, yes, that should be a good way to at least do a tiny tactical check and a bit of understanding. At least something, you know, which makes sure I'm aware. Actually, I really don't know what to do, but okay, something is better than nothing. So I guess it's a good thing. I'm reading this, that's good in itself, but I guess that thing is even better. What is the most amount of miles available? What is the what is the यहाँ पर क्या कर सकते हैं पता नहीं यार. मतलब नाइट B4 जैसा कुछ ही कंसिडर करूंगा मैं. नाइट B8 नहीं. नाइट D4 इंटरेस्टिंग. नाइट D4 बिशप C5. ओ भाई साहब ये क्या है. क्वीन C5. ओ भाई साहब ये क्या है. नाइट E2 टेक्स ओ भाई ये क्या है. नाइट D4 क्वीन C5 टेक्स. ए टेक्स नहीं. सॉरी ओ क्वीन B6. नाइस. A B6 बिशप C5 C3 नाइट F6 डेवलप. D4 आ रहा है. आने दो. कौन मर रहा है. ओ शूट. बिशप D6 कौन बचाना पड़ेगा. F3 मारा मारा. हम्म, बचाना तो पड़ेगा. बिशप C4 क्या करेगा. मारा मारा. सोच ही नहीं रहा मैं. D7 नाइट F6. तू ही बता दे भाई. नहीं पता. यार वो एक्सरसाइज दे रहा है. Queen D4 एक्चुअली रीड ही करना चाहिए. नहीं 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 एक्सरसाइज वगैरह बुक दे रहा है तो क्लियर है. नॉर्मल स्टैंडर्ड गेम देखने की कभी कमी तो होगी नहीं. इफ आई वांट रियली ट्राई दीज थिंग्स like analysis, analysis and whatever. I can see the latest chess games of the grandmasters, and I can even look at the classics from let's say MGP. Actually, you know what? This is the best way to look at the classics at least. And I also have that chess mode ka course bhi bacha hua hai. So I can just do that. And in the meantime, if I want to study something, then latest games should do the job, like somewhere from the twig, and that should be good enough. Why not you learn something? King G1. Now the H1 rooks remain unused for the remainder of the game. King F2, G3. Okay, nice idea. This brilliant return sacrifice. What compels black white to accept? हाँ वो भी है. एक्सेप्ट क्यों करना है. इग्नोर भी तो कर सकता है. F3 आ रहा है क्या. बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है F3. बताने दो उससे क्या होता है.
मुझे क्या पता कंपेल के करना है, वरना क्वीन C5 है, कोई डिफेंस ही नहीं है क्वीन C5 का। बट नाइट F4 ओके डजंट मेक सेंस। आई एम वेरी बैड एट दिस थिंग, बहुत complicated है, or maybe I need to think. I should not just give 1 second and just try to justify it. What compels white to exclaim? He can just pick off F4 instead. Yes. What compels him to? See, why can't he just pick up on F4 instead? Let's see that. Well, he can't pick up on F4 for sure because Queen C5 is a very strong threat. But if he goes Bishop E3, huh? Focus. New to this thing. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वीन C5 तो नहीं है, क्या है, कुछ तो होगा। टैक्टिक्स में वीक तो नहीं हूं मैं, बट आलस जरूर आता है टैक्टिक्स देखने में, कौन ही देखे यार। जस्ट नॉट दैट अलर्ट एंड नॉट अ बिट रेकलेस आई वुड से। Not forcing myself to calculate, but calculation is better. Needed. Stop making excuses. Just think. Bishop F4, Queen C5, but the Bishop E3 has that doesn't work for sure. Knight E2 भी नहीं, Queen E2 ना तो करना की तलाश। Hey, but we can change the order. Knight F3, Knight F3, yes, Knight F3, no, wait. Knight D2, Queen E2 takes, then Bishop E3. Bishop E3 is a bit problematic. We can't start with Knight E2, that is not working as well. Bishop F4, or what we start with F3, nah. F3 takes Queen 3, 6, 3, 3. Boom, boom, Bishop G4. 6 मोहरे निकालने का आंसर नहीं है, कुछ तो टैक्टिकल है। स्टॉप, मोहरे निकालो, मोहरे निकालो, हर वक्त नहीं निकाल सकते तो मोहरे। नाइट B3 ही होगा, और क्या ही होगा। नाइट F5, ओके, थ्रेटनिंग नास्टी चल, ओके, ठीक है। क्वीन H4, ओके, क्वीन G7, क्वीन G4, रुक H3 टू मेक एन इनफॉल, ठीक है। नाइट F6, क्वीन F3, रुक G8, बिशप D3, शिट, एंड वाइट इनिशिएटिव। वाह, और मैं कुछ भी सोच रहा था जैसा। या मैं भी वही सोच रहा था, कुछ दिख तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ ही होगा। ठीक है, क्वाइट लॉजिकल। क्वीन C5, क्वीन B6, नाइस मूव। B4 पे टेक्स, बिशप E3, C3, बिशप F8, वाओ, वाओ, स्कीवर। अच्छा, ड्रॉ हो गया, काय का ड्रॉ हो गया। स्कीवर नहीं दिया, F4 चेक आ गया, क्वीन C3। ठीक है, बहुत क्रेजी स्टफ भाई। कैसे कर लेते हो आप कैपाब्लैंका जी ये सब चीजें, हम तो इवेलुएट भी नहीं कर पा रहे। 92, B6, AB6, 94, आफ्टर द क्वीन एग्जिस्ट। यार एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा अनक्लियर लग रहा है। तीन पीस है, एक्सचेंज डाउन है ना, बट क्वीन C3 इसके बाद क्वीन C3, नाइट F6, ठीक है, मतलब नॉर्मल पोजीशन है, कोऑर्डिनेटेड है पीसेस, बट कुछ कहीं ना कहीं okay। हाँ, बिशप C5, AB6, knight D4, bishop C5, C3. Exercise planning. The fight for D4 is the center of gravity in the universe.
It looks like white has everything under control. He doesn't. There is an odds with strong weapon. T rook is 4 और क्या obviously. मैं क्या सोच रहा था यहाँ पे should be 6. हम्म मिल जाता अगर 4-5 मिनट सोचता हूँ. You know what, I'll just stick with this playbook. अगर मुझे इतना ही शौक है ये एनालिसिस करने का तो मैं जीएम से गेम एनालिसिस करूंगा. कोई बढ़िया सा उठाऊंगा लेटेस्ट गेम, एनालाइज दैट. वर्ल्ड रैपिड हो गया या फिर कुछ लंदन क्लासिक्स वगैरह. एनीथिंग, एनी annotated game for instance, which is not a typical book or exercise. पापा बुला रहे हैं. I'll be back in a minute. Or maybe I have to pause because मेरा पिज्जा आ गया. गलना तो कर ना तो क्वीन C5 F4 B4 अगर होता is met by very tricky rook B4. Damn. Bishop E2, his king needs here. Bishop D4, king D4, rook D4. ओके, स्कीवर लगाना चाह रहे हो. मैं पॉन मार दूंगा तो ये पॉन मारोगे, लेकिन अगर मैं रुक हिल जाऊंगा तो फिर यहाँ जाओगे, फिर बिशप F3 जाओगे, फिर मैं यहाँ हिलूंगा, फिर A3 जाओगे. बट तुम्हारा ये तो मर गया. नाइट F6 इज बेस्ट. सेकंड को बिशप B2, D2, बिशप H5. White fires a bullet into the wall to test the forensics of the position. ठीक है. This move is also a diversionary tactic designed to throw exercise critical decision. It looks like white managed to develop and now hopes to grab some initiative. What should black do? First, I'll have to think. Before that, I'll have to see that where is my pizza. नहीं यार, स्कीम 78 का ही बढ़िया है लापिनोस. Not that good. Nah. Hmm. 3 knight F4. Knight F4. Rook F1 now. Takes. लगता है knight F4 वर्क करना चाहिए. मतलब takes the bishop, rook takes F3. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. एंड गेम में जाने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है. D5 तो अपना ही है. रुक उसका पूरे तरीके से बंद है यार, पूरे तरीके से बंद है. सो आई थिंक even knight F6 can be a bit dark, but knight F6 थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. rook F1 D4 rook F3 D4. जान ही नहीं डालता है पीछा में, मरे मरे देता है. और सस्ता हो महंगा हो नहीं क्या. आई थिंक मार देना चाहिए. वही मैंने बोला F3. हम्म बोला यार ये अच्छा दिख रहा है, मतलब यही.
इस पे कैफ टू उसी में तो मैंने देखा ही नहीं। भाई साहब उफ। उफ। माइंड हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग। नहीं यार, गर्म करके खाऊंगा, मजा नहीं आ रहा। बिशप एस थ्री, इंटरेस्टिंग। You sure that's interesting? Yeah, very much. Bishop s3। क्या ही करेगा। गेम सेम्स ओवर। बुम 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 बुम। नहीं। बुम 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 बुम। बिशप s3। 100%। ओके, आई एम रॉन्ग। रूक g2, रूक f2, किंग e1। अबे यार, मैं क्या कर रहा हूँ, g2 नहीं देखा। बिशप s3 गलत है ना। हम्म, गलत क्यों है बट इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बिशप s3 रूक h3 नहीं यार। ठीक है, रुक g2, ओके वो तो समझ आ ही रहा है। बिशप s3, बिशप f4, ठीक है, रुक g2, इधर फिर इधर, g1, ठीक है। नहीं, रुक h3, नो, नो। बूम बूम बूम, और ये ड्रॉ कैसे, अब तो मुझे हारा हुआ लग रहा हूँ भाई वहाँ पर ओनली लूजिंग ही है। सिर्फ ड्रॉ ही कर सकता हूँ, अच्छा। अच्छा, माय बैड। पिज्जा में चले गया था। टेक्स टेक्स गिफ्ट, d3, king d1, b2। Are you ready for a mind blower fact? Hooper and Redknapp claim in the unknown Capablanca that the prodigy consumed just 5 minutes on the film. Amazing। मजा आ गया भाई। बढ़िया गया। ठीक है। अच्छा गेम था। गुड नाइट।